Hello student. Uh, as you know, in our last class we have discussed about the various types of plans. So in this video today we are going to discuss about the policy, which is one of the types of plan, and its features and benefits. Okay. So student, first of all, as you know, in our last class we have discussed that policies means what? Policies are some guidelines, or you can say it is some principles which helps or guide the thinking and action of an organization. Clear? You can, or you may say that these are basically some statements which guide the managers in an organization so that they can take good decisions for the whole of the organization. So, and also I have cited some examples like generally policies comes in kind of the statement like we'll deal with wholesalers only, or we do not sell on credit. So similarly there could be other policies in the areas of purchase, finance, production. So basically it sets some boundaries under which any organizations need to perform. Clear? So basically policies means what? It tells the members of the organization how they should deal with a particular problem in a given situation. Okay, and it sets the limits, and all decisions are required to be taken with the framework for or ambit of the policy, so that the decisions taken by the management in tune or conformity with the overall objectives of the business. So now let's start with the features or characteristics of policy. So student, first of all you should know the point number 1 is given here. It is an expression of intentions, means what the organizations want to do. A policy is an expression of intention of the top level management, and it lays down the principles which will serve as a guide for the future course of action for the organization. Clear? Point number 2 is it is based on the objectives of the organization. So generally policy student क्या होता है, जो organizations का objectives होता है, like this year they want to increase their sale by 20%. It is one of the objectives. तो वो objectives को achieve कैसे करेंगे उसके लिए पॉलिसी बनाया जाता है. ये भी एक फीचर्स होते हैं. जनरली जो पॉलिसी होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस करके होते हैं. एक पॉलिसी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. इट कैन नॉट गो अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज. पॉइंट नंबर 2 इज इट शुड बी कम्प्रीहेंसिव. कम्प्रीहेंसिव का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? ओवरऑल जहाँ पे यूज होता है. क्लियर? ए पॉलिसी इज नॉट ओनली लॉन्ग लास्टिंग बट इट ऑल्सो सफिशिएंटली कम्प्रीहेंसिव. इट इज फॉर्मुलेटेड इन सच ए मैनर दैट इट कवर्स ऑल पॉसिबल कंडीशंस which can be reasonably anticipated by the management. Clear? तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर सारे जगह पे यूज़ करने के लिए पॉलिसी को बनाया जाता है. ये शुड बी रियलिस्टिक. ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉलिसी ऐसा हो गया जो चीज़ अनरियलिस्टिक विच द एम्प्लॉइज कैन नॉट बी एबल टू अचीव. नो, नथिंग शुड बी लाइक दैट. पॉलिसी शुड बी रियलिस्टिक. ए पॉलिसी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, definite, clear, realistic, which means that it must be capable of being executed or translated into action. Clear? Point number 5 is it is developed by the people in the organization. तो obviously policy जो है वो कौन develop करेगा? It's after all the people of the organization which are working in the organization. So policy is a direct outcome of the mature deliberation and thorough discussion by the people. Basically top level management, they discussed about the policy and they developed the policy for the organization. And always remember student, not only the top level management but also the other functional level like various departments and operational level, they also prepare policies. It must be in harmony with the other policies in the organization. तो policy ऐसा होना चाहिए कि suppose top level management has prepared some policy for the whole organization, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट का जो पॉलिसी है उसके साथ वो मिसमैच हो रहा है. नो, नथिंग लाइक शुड बी लाइक दैट. पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द एंटरप्राइज मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द अदर पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज एज वेल एज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, जो कि करंट सिचुएशन चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके भी पॉलिसी बनाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिसीज में क्या होता है स्टूडेंट? देयर आर जनरली some types. So in different book you may get lots of types. So here basically we are going to discuss some 5 types of policies. So point number 1 is basic or general policies, so which is prepared by the top level management for the whole organization. Okay,
देन फंक्शनल पॉलिसी क्या होता है, तो अदर डिपार्टमेंट जो होता है ना, लाइक मार्केटिंग, प्रोडक्शन, तो हर एक डिपार्टमेंट में भी पॉलिसीज क्रिएट करते थे। जैसे कि उसको फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाइक प्रोडक्शन परचेस पॉलिसी, इन्वेंटरी पॉलिसीज। देन पर्सनल डिपार्टमेंट में क्या हो सकता है, लाइक स्टाफिंग पॉलिसी, ट्रांसफर पॉलिसी क्या होगा, वेज पॉलिसी क्या होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी प्रोडक्ट पॉलिसी आते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी। देन फिनेंस डिपार्टमेंट में आता है डिविडेंड पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। तो ऑल दीज पॉलिसीज, ये अलग अलग जो पॉलिसीज है वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे बिलोंग करता है, तो उसको फंक्शनल पॉलिसीज बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशनल पॉलिसी। ना ऑपरेशनल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है, तो डिपार्टमेंट में यूज़ कर पॉलिसी जो यूज़ होते हैं उसके बाद जो सब यूनिट में यूज़ होते हैं, डिपार्टमेंट के बाद फिर से सब यूनिट में अलग से यूज़ किया जाता है, उसको ऑपरेशनल पॉलिसीज बोलते हैं। देन इंटरनल पॉलिसी ये क्या होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, दीज आर द रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड आर इनिशिएटेड बाय द मैनेजर्स टू गाइड द सबऑर्डिनेट्स। देन एक्सटर्नल पॉलिसी वो क्या होता है, दिस पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड टू मीट द वेरियस प्रेशर एंड रिक्वेस्ट ऑफ फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज गवर्नमेंट, ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा। नाउ व्हाट डज इट मीन, देखो इंटरनल में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर बेसिस करके पॉलिसीज बनाया जाते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स है टू इंक्रीज द ब्रांच इन दिस एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर। तो ब्रांच इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली सेल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर बेसिस करके एक पॉलिसी बनाया गया, तो वो इंटरनल। बट एक्सटर्नल में क्या होगा, लाइक गवर्नमेंट फोर्सेस, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कंज्यूमर राइट्स को फोकस करो, तो यू शुड फॉलो द कंज्यूमर राइट्स, तो उसके ऊपर बेसिस करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डिसाइडेड टू डील्स ओनली इन क्रेडिट और ओनली ऑन कैश। तो ये एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का जो फोर्सेस है उसके ऊपर वो या फिर ट्रेड एसोसिएशन है उसको सोच के जो पॉलिसी बनाया जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। नेक्स्ट सी द बेनिफिट्स ऑफ पॉलिसी। अब पॉलिसी जो होते हैं एक टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं विच इज़ बेसिकली क्या प्लान होते हैं, विच इज़ स्टैंडिंग। ओके, तो उसको बार बार हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं पॉलिसीज़ का, एक पॉलिसी बनाने से या पॉलिसीज़ जो बनाते हैं अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स means we will get from these policies. Okay, so point number 1 is guidance. So obviously you should remember the policies serve as a guides to the decisions in specified situation in future में कैसे organizations work करेंगे उसको guide करते हैं। then organizational okay, then next point क्या है, prompt actions। तो quick action, prompt actions का meaning क्या है, quick actions। तो policies जो होते हैं it ensures promptness of actions because managers at various levels can act with confidence and without the need of consulting others every time, क्योंकि उनको पता है कि क्या उनको करना है, because policies are given, guidelines are given। next point is consistency। तो देखो once you set up the policies it can be ensured that decisions are consistent with the interests and objectives of the enterprise। that means एक पॉलिसी बन गया तो उसके ऊपर जो डिसीजंस मेकिंग है, लाइक एम्प्लॉयज़ को अभी डिसीजंस लेना होगा, तो इट कैन नॉट वेरी कि अच्छा पॉलिसी हो गया तो उसके ऊपर डिपेंड करके वो लोग अपना कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करेंगे, डिसीजंस भी मेंटेन करेंगे। टाइम सेविंग, that means policies save the time and effort by pre-deciding on प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटेटिव नेचर। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी पॉलिसी हेल्प करते हैं, क्योंकि पॉलिसी एक बार बना दिया गया तो यू एज ए मैनेजर यू हैव टू फॉलो द पॉलिसी एंड विद दिस यू कैन इजिली सेव द टाइम नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम्स यू मे फेस। पॉइंट नंबर 5 is reduction in conflict. Policies also specify the management-workers relationship and thus help in reducing the organizational conflicts. Okay, तो पॉलिसी जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट अराइजेस होने का चांसेस है उसको रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी है तो वो और मैनेजर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, सबऑर्डिनेट्स को भी फॉलो करना पड़ता है, तो इस तरह से पॉलिसी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिडक्शन करने के लिए। तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड today's lesson. So this is all about the policies. On our next class we are going to discuss about the procedure. So if you have any doubt you can write down in the comment section. So that